ग्रीटिंग्स ऑफ द डे स्टूडेंट्स। सो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। सो फर्स्ट एप्लीकेशन है जिसमें वी हैव टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फॉर इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर। इज इट ओके? ऑल राइट, सो विल स्टार्ट। सबसे पहले हमें लेना है इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर। ये लीजिए, हमने स्ट्रेट वायर ले लिया which is uniformly charged, say for having a charge of plus q. Is it okay? Okay, now सबसे पहले हमें बनाना है क्या? गॉसियन सरफेस। ठीक है, नाउ गॉसियन सरफेस के लिए हमें इस चार्ज को क्या करना है? एनक्लोज। सो हम एक छोटा सा एलिमेंट ले लेते हैं। सो ये हमारा हो गया गॉसियन सरफेस। एज पर गॉस लॉ फाई ऑफ ई इज इक्वल्स टू सरफेस इंटीग्रल ई डॉट डी एस इज इक्वल्स टू क्यू एनक्लोज्ड divided by epsilon naught. Okay, so either we have total three surfaces. What are they? First one, this one. Second, this curved surface area, and third, this one. Is it okay? Now for this given surface area or for this given Gaussian surface, we have total three surfaces. Is it okay? So first of all, we are going to draw the direction of electric field lines, that is electric field vector. Okay, now these are the direction of electric field. Is it okay? All right, now we have three surfaces, that means we have three area vector. That means here first ds n cap, here we have second one ds n cap, say first to second, and this third one ds3 n cap. Now phi total is equals to phi 1 phi 2 phi 3. Okay, now phi total is equals to phi 1, that is E dot ds1 plus phi 2 E dot ds2 plus phi 3, that is E dot ds3. Is it okay? And that is equals to q enclosed by epsilon naught. Is it okay? Now E dot ds, for the first one, angle between E vector, angle between this E vector and the area vector. See, this E vector and this area vector is 90. Same angle between this E vector and for the third one is again 90 degree. That means E dot ds for both cases cos 90 will be there. So we can say E ds cos 90 degree, first one, plus E dot ds, here we have angle cos 0 for second one. Area vector will be radially outward, that means cos 0 plus
E, okay, E ds cos of 90 degree is equals to Q of enclosed by epsilon naught. Continuing this part, cos 90 and cos 90 here will be 0. So we have E ds, that is cos 0 1, equals to Q of inside by epsilon naught. Now इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है. इंटीग्रेशन ऑफ ds gives you Q of inside by epsilon naught. Now what we have, if I am considering the length of this cylinder is L and say radius is small r, okay. Now ds will be surface area, that means this curved surface area. Is it okay? Now E dot surface area for the given cylinder for the Gaussian surface is 2 pi r L equals to Q of inside by epsilon naught. Okay, dear students, we have one more parameter that is known as linear charge density. That is known as linear charge density, which is denoted by lambda. I'm writing linear charge density. This means lambda equals to Q divided by L. Okay, now for this given L, Q will be lambda into L, okay, and this Q will be applicable here. Is it okay? That means substituting value of Q in this equation, we will get E dot 2 pi RL equals to lambda L by epsilon naught. So हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है. तो इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर ई इक्वल्स टू लैम्डा एल बाई 2 पाई आर एल एप्सिलॉन नॉट. इज इट ओके? समथिंग कॉमन ई इक्वल्स टू ये एल से ये एल स्वाहा and we can write E equals to lambda by 2 pi r epsilon naught. We can write E equals to lambda upon 2 pi r epsilon naught. On rearranging, we will write lambda upon 2 pi epsilon dot r. Is it okay? एक काम और कर सकते हैं, इसको इसी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई एंड 2 से डिवाइड. क्या मिला हमें, इससे क्या फ़ायदा हुआ? E इक्वल्स टू 2 लैम्डा बाई, इट विल गिव्स यू इन द डिनोमिनेटर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू r. ओके, और शायद 4 पाई एप्सिलॉन हमें देखा देखा लग रहा होगा. इज इट ओके? That means E equals to 2 k lambda by r. As we know, 1 by 4 pi epsilon naught equals to what? K. So our answer is E equals to 2 k lambda by r, and E is proportional to 1 by r. अगर हम ग्राफ बनाते हैं डिस्टेंस r एंड इलेक्ट्रिक फील्ड का, सो वी विल ड्रॉ इन दिस वे. इज इट ओके? एंड दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ.